Hi friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Chef Mohit. So today I'm going to prepare shrimps risotto. तो guys देखते हैं shrimps risotto बनाने के लिए मैं कौन कौन से ingredients को यूज़ करता हूँ और इसको मैं किस प्रकार से बनाता हूँ. चलो देखते हैं आज. So for risotto we need first thing is onion chopped, shrimps, butter, parsley, and some rice, cream, and most expensive thing is saffron. Saffron हिंदी में इसे केसर भी बोलते हैं. So we will use also this. All those things we will use. So first thing we need to put olive oil. Some olive oil. Then close it. So I use some chopped onions. थोड़ी देर इसको सौते करेंगे. ऑनियन को सौते करने के बाद इसमें राइस ऐड करेंगे. तो आफ्टर 2 मिनट ऑनियन लिटिल बिट सौते, थोड़ा सौते होने के बाद ऑनियन, अब हम इसमें राइस ऐड करेंगे. तो फिर दिस इज राइस रिसोटो, कॉल रिसोटो. Some more risotto because this risotto not enough. I use some more. So little bit more saute with the risotto. About 2 minutes. तो अब 2 मिनट हो गए, राइस को भी हमने सौते कर दिया. अब हम इसमें ऐड करेंगे श्रिम्प्स. सो हियर इज श्रिम्प्स, द स्मॉल साइज ऑफ श्रिम्प्स, नॉट बिग. आई विल पुट ऑल द श्रिम्प्स अराउंड 1 minute. I will saute again. Or you can say chicken broth. Yeah, this is chicken broth. In future I will show you how to prepare this chicken broth. So now I will add in the risotto. Some more. And one more thing I will add. Saffron. Saffron और हिंदी में हम इसको केसर भी बोल देते हैं. केसर यूज़ कर रहे हैं. ठीक है जी. I think enough. अब कुक होने देते हैं. अब इसको कुक होने देते हैं अराउंड 15 मिनट. 15 मिनट के बाद इसको कवर करके रखते हैं. 15 मिनट के बाद इसको चेक करते हैं. तो कवर कर दिया. अब 15 मिनट के बाद चेक करेंगे. सो वी नीड टू ऐड सम सॉल्ट ऑल्सो. ठीक है. तो आफ्टर 15 मिनट वी ओपन. It looks like this, and I will add some cream now.
here is the cream. Some more because it was very okay. With cream we will cook around 5 minutes more, then again we will open. So after 5 minutes I open, it is almost cooked. I will add now butter. Some butter here. I put some butter. Take around 2 to 3 minutes. Now I will close the fire. I will leave like this, and I will add two more things. First parsley, then parmesan. So here is the parsley. And parmesan, most important thing in Italian cuisine. Just mix it well. You need to mix very well. Now risotto is done. Now I'll put in the containers. Risotto don't need it dry. Risotto should be little liquid. So because after 5 minutes it's become more dry. So we need to leave always like this. So close. So our risotto is ready. You can see now ready to eat. So please do subscribe, comment and like. Thank you very much. तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसको शेयर कर देना ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ सकूँ. थैंक यू वेरी मच.